right now in a corona situation, it's very difficult for the pass outs or the students to think that how and what they should do for the jobs, and what will going to be the future of the CMA, or in terms of the finance, or what work will how the work will going to change. So how do you think, in respect of, you all three are in three different industry, they different fields, so it will be very good that the viewers will get the different perspective of the different ideas. So starting with, let's start with Manisha. How do you think that in this corona time, what is the difficulty you face, and what are the stuff that you think will going to change, if it will change in practice because of this corona or something, in terms of work, or what do you think? What is the scope now for the work? सी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कोविड अगर मैं बोलूँगी तो आजकल के टाइम पे अगर आप देखोगे कोविड की वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएमए अफेक्ट हो रहा है या सीएमए को हम्म जॉब्स नहीं मिल रही, पूरा दुनिया में ही ऐसा हम्म हो रहा है इशू। किसी को जॉब नहीं मिल रही, हम्म अगर अगर वो जॉबलेस है, या अगर जैसे कि अगर हम देखें कि हम सिर्फ ये क्रिटिसाइज करते हैं कि अभी सीएमए जो दिसंबर क्लियर हुआ है उनको जॉब्स नहीं मिली, बट सीएमए हम्म जो सीए नवंबर अभी क्लियर हुआ है इवन उनके पास भी जॉब्स नहीं आए, वुड से दे आर ऑल्सो हम्म सर्चिंग फॉर द जॉब्स। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ सीएमए के साथ ही ये सब हो रहा है। और मैं आने वाला टाइम ये कहूंगी, जैसे कोविड में हमने सबने देखा है कि टेक्नोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल। हम सब जो भी यहाँ पे कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, जो भी वेबिनार्स सेमिनार्स जितने भी सब कुछ अटेंड हो रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो रहे हैं। तो हम्म यहाँ पे सीएमए का एक प्लस पॉइंट मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पे जैसे क्या है कि कॉस्ट कटिंग एक सीएमए ही कर सकता है, ये तो सबको पता है। तो सब हमारा मेजर रोल यही होता है। तो अगर ये पेंडेमिक, अगर ये सिचुएशन चल रही है यहाँ पे सब लोग आजकल के टाइम पे यही देख रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट कैसे बचाएं, कैसे सेव करें। तो राइट दीज आर द मेन थिंग जहाँ पे सीएमए उभर के आ सकता है। ठीक है। और राइट साथ में ये बोलना चाहूंगी कि अगर जो सीएमए है वो कॉस्टिंग में ज्यादा परफेक्ट होते हैं। तो कॉस्टिंग में क्या होता है कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर बना लो, आज तक अकाउंटिंग का बन गया है, टैक्सेशन का सब कुछ बन गया है, क्या आपने कभी सुना है कॉस्टिंग का भी बना है? तो ये कॉस्टिंग का एक एनालिटिक पार्ट है। आगे जाके अगर सिर्फ नॉर्मल अकाउंटेंट है उनका मैं आगे जाके थोड़ा रिस्क है कि आगे क्या फ्यूचर होगा, बट मैं सीएमए को कभी लेट डाउन नहीं करूंगी इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो सीएमए है वो हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत एनालिटिक पार्ट है जो सीएमए प्ले करता है रोल कॉस्टिंग वगैरह में। आज तक कभी सॉफ्टवेयर नहीं बना, क्योंकि ये ऐसी चीजें सॉफ्टवेयर में हो ही नहीं सकती। आप कैसे सॉफ्टवेयर में किसी की कॉस्टिंग, किसी कंपनी की कॉस्टिंग बना सकते हो या कर सकते हो? एक स्पेसिफिक हम अगर हम देखें भी कॉस्ट ऑडिट के लिए हमारे पास इनेक्चर्स हैं, बट क्या आज तक कभी उसकी वर्किंग के लिए हमारे पास आया कि हम उसकी वर्किंग कैसे करेंगे? कभी नहीं। ये हमें राइट ही अपने अपने मतलब फॉर्मूलास वगैरह जो भी है हमें अपना, राइट, हमें ही अपना माइंड लगाना पड़ता है। कॉस्टिंग कैसे है, कैसे हम क्या क्या मतलब लास्ट ईयर अगर कंपेयर करें तो क्या क्या चीजें हमने चेंज हुई है कंपनी में, क्या क्या हम और सुधार सकते हैं। तो देखा जाए आने वाले टाइम आई वुड से सीएमए का ही है। और इन दिस पेंडेमिक ओके सिचुएशन ऑल्सो हमने देख लिया कि क्या क्या मेजर रोल हम मतलब सफर कर रहे हैं, क्या क्या। अगर सिर्फ सीएमए के साथ होता तो मैं कहती कि सीएमए का शायद थोड़ा फॉल्ट है। ऐसा ही है, बट हम्म ऐसा सबके साथ हो रहा है। और यहाँ पे मैंने इतनी सारी, मैं जब से प्रैक्टिस में आई ना मुझे हर जगह जॉब से दिखती है सीएमए के रिगार्डिंग। मेरे को इतनी मेल्स आती है naukri.com की कॉस्टिंग कॉस्टिंग। फिर मैं सोचती हूँ कि यार ये पहले जो बच्चे बोलते रहते हैं कि कॉस्टिंग के लिए ये नहीं है वो नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आई वुड से। तो इकोनॉमी आने वाला टाइम आई वुड से सीएमए का ही है। सो होप फॉर द बेस्ट। Hope for the best. So Saloni, let's move on to you. What do you think in the job? You are in a job, you are in a organization. So what do you think how it's affect the work? मतलब पहले काम का आपका work कैसा था, अभी कैसा चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? मैं अगर आई मीन इफ यू कंसिडर माय ओपिनियन, आई एम इन टू अ रिस्क कंसल्टिंग फर्म एंड कंसिडरिंग दिस होल पैंडेमिक, हमारा तो बिजनेस बढ़ ही रहा है, तो मेरे लिए कहीं सेटबैक नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हाँ ठीक है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं काफी लोगों की, काफी जो जॉब में थे उनकी जॉब वो खो चुके हैं, बट देन इट्स नॉट लाइक यू डोंट इवन हैव अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। एंड ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको 6 महीने हो गए आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको पहले मिल जाती अगर ये पैंडेमिक नहीं होता। शिल्पा वाज हियर विद अस, शी शेयर्ड कि कितना स्ट्रगल था उनके लिए टू गेन अ फर्स्ट जॉब।
So there is always a struggle, and I always face life or the situations that I have in my life in a matter that maybe this was my share of struggle. Maybe I might have a matching kind of comfort in my life ahead. If I have struggled for 6 months, तो शायद अगले 6 महीने smooth होंगे. Right. Recently, my own company had 15 vacancies for CMA, and I have 15 referred, vacancies for the CMA. yeah, 15 vacancies for CMA, even Okay. including the CMA intern level. And I have myself recommended 15 people. I'm not sure how many of them are here today with us, but in those, even in those 15 people, if two crack or even one crack the interviews and get into the organization, I'll be happy because I have at least helped one of the fellow CMA professional. So, Mm-hmm. guys, in continuation to this, I would say that we need to, we have a very strong alumni base, but we don't utilize that. Like we have our Right. host working into a different field. We have Manisha into practicing. We have Disha into teaching. But how many of you have been approached for opportunities in your field? Because Yeah. Correct. utilize our alumni base only. So, I mean, and that's when I said, initially I covered the importance of LinkedIn, which the difference it makes. Because if you would Mhm. have on LinkedIn today, and when you see a particular profile opening in my organization on the CMA and you connect, you will know Ha. how Yes. many people, how many of the alumni of your institute are into that organization. And I will definitely It have a soft copy shows. for CMA. So It shows that in is the what we LinkedIn that how right. much CMAs are there, how much CA are there, if they are CA. Exactly. Yeah, I have seen. We talk It's about टॉप ऑर्गेनाइजेशन बट हम ये नहीं सोचते कि कितने एल्यूमिनाइज हैं हमारे क्योंकि हमारे right. हमने प्रोफाइल क्रिएट नहीं की है तो हमने सीएमएस के साथ कनेक्ट नहीं किया हमने सीएमएस के साथ Right. कनेक्ट ऑब्वियसली वी डोंट नो कि हमारा कॉन्टैक्ट बैठा है वहां पे एंड Mm-hmm. ऑनेस्ट नो मैटर वेर एवर यू अप्लाई फ्रॉम if you have a referral, if you have a referee, basically, that is the best way you Mm-hmm. can reach a company or a profile. Right. So, I mean, I don't think we are utilizing our resources well. Right. So that is one thing I think opportunities are not like extinct for us. There are a lot of opportunities for us, and we should explore them. We should not lose hope again. I would say, थोड़ा wait करो. सब कुछ we expect things to be better and normal. Obviously, not anytime soon, but हाँ, it's not that you are only facing the hard time. It's just that Mm-hmm. Right. you have to I be think strong and working towards it. I think this is Saloni has said very well. Guys, make your LinkedIn profile very professional and do not afraid and do not restrict yourself to approach someone. Last time, just few day back, I talked to one of my friend Priyanka. She is also looking for these opportunities. तो उसने मुझे भी सेम प्रॉब्लम कहा कि यार अप्रोच करे मतलब कैसे करे मैं तो जानता ही नहीं किसी को मैं तो कभी कैसे बात कर सकते हैं बात तो नहीं कर सकते हैं तो मैंने भी उसे वही कहा कि व्हाट्स द पॉइंट व्हाट्स द इश्यू अगर बात नहीं कर सकते कभी नहीं मिले हैं तो वो प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है ताकि आप जिसको नहीं जानते हो आप उनसे मिलो आप उनसे बात करो आप अपने बारे में थोड़ा बताओ कि आप क्या आपका क्या बैकग्राउंड है Don't एंड you feel texting on that part, leaving a small text that, ma'am, I tried to reach you, or CMA Saloni, I tried to reach you. Please get in touch with me. This is with regards to the profiles open in your company. Wouldn't that help? It's just the matter of how we approach. It has to be professional. very 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 well said Saloni do not call try to make a professional text first एंड इफ जो सामने वाले बंदे हैं अगर उनको लगेगा कि वो आपकी मदद करेंगे दे विल डेफिनेटली टेक्स्ट बैक टू यू बट डू Exactly. नॉट Because कॉल और डू अगर नॉट या मैं टेक्स्ट मैं फर्स्ट यू शुड टेक्स्ट बिकॉज अगर मैं खुद से जॉब पोस्टिंग शेयर कर रही हूँ आई एम सिटिंग देयर टू हेल्प पीपल बट कंसिडर some value of my time as well. That is what I would say. And this is one of the राइट recent experiences, and that's why I could recall it, and that's why I'm quoting it here today. राइट That there has to be a professional way of doing everything when we become professionals, because this
professional word or this prefix of CMA brings a lot of responsibility over us. यस, और अगर आप ऐसा कुछ अनप्रोफेशनल वे करेंगे ना, तो ऐसा हो सकता है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला था जो आप लूज कर गए बिकॉज ऑफ सम Exactly. अनप्रोफेशनल बिहेवियर. सो मेक अ प्रोफेशनल अप्रोच, टेक्स्ट द पर्सन that you want to some help, you want some suggestions, whatever, and the सामने वाले बंदा खुद आपको अप्रोच कर लेंगे that yes, let's talk about it. So this is the And we should very maintain the and decorum of timing also. If somebody yeah, is messaging at 2 a.m., you cannot expect us to reply back. yeah. Right. So this let's move on to you, and let's talk about what your views in this pandemic situation, your work, and the future of your work with this. So since I'm online, Yeah. so my business has grown in that pandemic time. Yes, I will say, you know what, I'll say it is blessing in disguise for me. But no, nevertheless, since we have a lot of people, as audience right now, coming from different backgrounds. So guys, don't get disheartened. It's okay if you have not got an opportunity for yourself as of now. Try keep on building on your knowledge. Maybe once things are back to normal, the normal which was before 23rd of March this year, जनता कर्फ्यू से पहले जैसा था हम वैसे वापस जब आ जाएंगे, शायद जल्दी ही आ जाएंगे. We can expect always for the best, but we'll have to be prepared for the worst too. Keep on working on yourself. This is what I'll say. Since we all have understood कि भी online का जमाना है या फिर e-commerce है या we things have gone on internet, तो हम उस पे काम कर सकते हैं, अपने आप पे काम कर सकते हैं. और opportunities ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है. Manisha has shared, Saloni has also shared, and so am I sharing. अपॉर्चुनिटीज हर जने के पास आती हैं, कभी किसी के पास जल्दी, किसी के पास देर से. Because I know people who qualified with me as a CMA, they started with very minimalistic packages of say 20,000-25,000 a month. But now they are doing very well in their lives. It is not always that you start from less, so you'll always be, you'll always not be able to grow yourself. It is just a matter of time. ये समय भी बीत जाएगा. राइट. मनीषा ने बहुत अच्छी बात जब कही थी कि यू हैव टू कीप पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग में तो है ही, बट आई थिंक दूसरे सेक्टर्स में भी है, कभी कभी जरूरत हो जाता है वहां पे भी पेशेंस का. सो यू प्लस अपने आप पे काम करते रहो. मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक साल वेस्ट करके इंडस्ट्री में जाओगे और इंडस्ट्री वालों ने आपसे पूछा कि एक साल तुमने क्या किया, तो ये नहीं बोल सकते कि बस मैं जॉब के लिए इंतजार कर रहा था कि आप मुझे बुलाओगे और मैं आ जाऊंगा. Exactly. And when we have this particular time with us today because of this whole pandemic, which is definitely not a thing to celebrate, but then we have at least time with us. I am personally, like I mentioned, I have enrolled for 2 courses recently to, gain more knowledge or develop my skills. I didn't have this time earlier because I was traveling 5 hours a day to reach my office and come back home. So when I'm saving 5 hours a day, why not to invest it in something good? Plus, guys, maybe I'll sound a little brutal, but I really want to be honest because sometimes honest opinions help people to change their lives. Now, we keep on saying this कि job नहीं है, unemployment है इंडिया में, so on and so forth. But I believe when you have talent, you have skill, somebody will recognize it. I know somebody who is an entrepreneur. He is doing really, really well. I'll not name the company, but he is into say corporate for more than 10 years. He has his own company, and he says कि लोगों को resume बोलना नहीं आता है, and they expect कि job मिल जाए. Guys, don't take me otherwise. I am also not the best. We all are not the best. We are also working for our own selves. But believe me, you need to work on yourself. You need to work on the areas which have loopholes. आपको काम करना पड़ेगा. आप सिर्फ मोर्चा लगाते रहो कि जॉब नहीं है, इंस्टीट्यूट जॉब नहीं दे रहा है, उससे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है. हाँ, because we have to realize the fact that we have competition existing in the market. There are like 200 applicants to a normal job profile, which might get you 25,000 a month. So if in those 200 applicants, your resume doesn't look good, how do you think you'll get the job? Forget about creating an impression on the interviewer. You'll not even be called for the interview. And recently, when I was receiving CVs for applying in my organization,
To some people, I actually went back and told them, guys, please work on your CV. And then their reply was, okay, I'll think about it. So And we that's cannot spoon feed, right, guys? We were not spoon exactly. fed, and we cannot spoon feed. Of course, you can use your alumni, as Saloni rightly mentioned. We also get help from people. Yes, it is always a chain. हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बट हमें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी पहले, तभी हमारी कोई हेल्प कर सकता है. हाँ, because And not only depend upon the CMA Institute. आपको CMA Institute already डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, ये नहीं कि सबको ही जॉब प्रोवाइड करेगा. आप खुद जाओ, जॉब आपको आराम अगर से आपके मिलेगी. पास नॉलेज है तो, डिग्री नहीं भी है ना तो 12th क्लास जिसने वो भी कभी भी गूगल तभी भी आपको जॉब दे रहा है. आपको नॉलेज होनी पड़ेगी यार. This is what I truly believe, and you'll have to love what you are about to start or you have already started. Only then you'll be able to survive. जो हमने अपने strategy management में पढ़ाई करी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, that is reality. We'll have to survive and grow only when we know something about that. अगर हमें नहीं पता है तो हम ना तो survive कर पाएंगे, ना ही growth हो पाएगी. सेल्फ खुद पे काम करते रहना, इट्स नाउ जिंदगी भर अब चलेगा. तो उसको आप मान लो तभी होगा कि ये तो भाई करना है और ये अच्छे के लिए है. इट्स नॉट फॉर द बैड थिंग, इट्स गुड फॉर यू. और उसे बर्डन लेके करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा. हाँ, और कभी I would just like to mention one thing here. Many of the people, many of our viewers must be having this thought right now that these people are today on the other side of the screen, and that is why we're giving so much of. Guys, we are here because we have been through that stage of your life which we who are might stuck on today. Because if you would not have been stuck on, you might not have had the time, or you might not have come to even see us or hear us out. So we're just trying to pull you up, guys, from wherever you are. We're trying to help. Please don't take us otherwise. It's just a humble request. Do not take it otherwise कि ये लोग इंस्टीट्यूट का फेवर कर रहे हैं, ये लोग स्टूडेंट्स का फेवर कर रहे हैं, पास आउट. कहीं हम लोग कभी किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं. वी आर हेयर जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस एंड जस्ट टू लेट यू नो कि क्या सिचुएशन हो सकते हैं और क्या सिचुएशन है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. So do not. Because majority of the times when something wrong happens to us, we are going back with a thought in our head कि यार क्या कमी रह गई. So these few things which we might not even realize कि कमी थी, and वो realize नहीं की थी, इसीलिए हम आज आपको बता रहे हैं. Because obviously we might have had these situations जहाँ हमारे पेरेंट्स हमें 10th 12th में बोलते थे कि बेटा अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए बस तुम्हारी लाइफ सेट है. फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले अच्छी जॉब मिल जाए तो तुम्हारी लाइफ सेट है. उसके पहले स्टार्ट होता था 10th के रिजल्ट से ही स्टार्ट हो जाता था. ये 10th पास कर दो, उसके बाद तो खत्म, लाइफ सेट है. हाँ, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है. फिर 12th में भी यही सेम चीज बोली कॉलेज के लिए, फिर उसके बाद सेम चीज बोली जॉब के लिए. तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस गाइस. हमें आज मे बी इफ आई एम अर्निंग X amount, my parents would say, why are you not earning X plus 50? Right. There's always a growth, there's always a scope of improvement, and we should definitely focus upon that. और अगर ग्रोथ के लिए फोकस नहीं करेंगे तो आज रिलायंस जो है वो रिलायंस नहीं होता ना. आज भी वो बहुत सारे लोगों को एक्वायर कर रहा है, आज भी वो जियो खोल रहा है, आज भी वो फाइट कर रहा है. तो अगर हम नहीं ग्रोथ ढूंढेंगे तो स्टैग्नेंट इट्स नॉट स्टैग्नेंट, इट इज डिक्लाइन इन योर ग्राफ ऑफ ग्रोथ. अगर आप And then we can never forget the level of criticism Jio received initially. Yes. A lot of people were like, ये कंपनी डुबा देंगे, 1 साल तक का फ्री नेटवर्क कौन देता है, and all that. But if we see it from a different perspective, that is because they had some idea behind it. So criticism is always there when you start something. Obviously, Manisha ने भी criticism किया होगा, या दिशा ने या शिल्पा ने भी जब जॉब छोड़ के कुछ करना शुरू किया तो उनको उनके घर वाले ही सबसे पहले क्रिटिसाइज करे होंगे कि आई यू मैड, यू लीविंग 50,000 per month and you're doing this which might not get you any penny for like 2 years or 1 year, and for how long you don't even know. So criticism is just the beginning of something good in your life. Yes, it's the part and parcel, and if somebody is talking about you, you should be proud of it, that somebody has time to talk about you. You are doing something that is impacting their head to talk about you. Right.
So and I think one suggestion I will also give, try to get in touch with your seniors. बहुत हेल्प मिलता है, मुझे And बहुत हेल्प keep मिला है। reading. और Yes. वन स्टेप अहेड, अगर आप इंटर कर रहे हो तो आप ऐसे किसी से टच में रहो जो फाइनल और जो ऑलरेडी इंटर पास करके फाइनल में है। जो अगर आप फाइनल में हो तो कोई ऐसे किसी से बात करो जो फाइनल पास आउट होके जॉब में है। तो कीप ऑन डूइंग दिस थिंग के एक वन स्टेप अहेड आप किसी से टच में रहो। लाइक और YouTube मैंने बहुत भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है. Sorry for interrupting. What नहीं नहीं no, नहीं our host is saying, he's perfectly right. यार मतलब you'll have to get in touch with somebody who is a little maybe one step ahead of वन you. स्टेप अहेड। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर टच में नहीं जा सकते, डोंट गो। एक स्टेप जो आपसे आगे है आप उनसे टच में आ जाओ बस। आप उसके बाद खुद ब खुद आगे की सीढ़ी ना आप चढ़ते जाओगे। मुझे बहुत हेल्प मिला था फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू। मैंने जब इंटरमीडिएट में था, तो मैंने एक बंदे से बात की, तो जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट पास हो गया, फाइनल में था। उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। ही डजंट नो मी एट ऑल। मैंने जस्ट उसे अप्रोच किया, प्रोफेशनली अप्रोच किया, और उसने मुझे लिटरली बहुत हेल्प किया। तो ट्राई टू गेट इन टच वन स्टेप अहेड। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत लोगों से बात नहीं कर सकते, जो आपके जोन में पड़ता है। जो स्टूडेंट है, आप इंटर में हो, आप फाइनल वाले से बात करो। आप फाइनल में हो, आप ऐसे किसी से बात करो जो फाइनल पास आउट होकर जॉब में है। आप जॉब में हो, आप ऐसे किसी से बात करो जो आपसे एक सीनियर एवव है। आप अभी तुरंत जॉब में आए हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या हो रहा, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, 6 महीने बीत चुका है, नो वरीज, सलोनी इज हेयर। वो आपको हेल्प करेगी। अगर आप प्रैक्टिस में कुछ करना चाहते हो, मनीषा इज हेयर, वो आपसे बात करेंगी। आप जिस घर जाना चाहते हो वहां पे किसी के टच में आने का कोशिश करो। और आप एक जन को ट्राई करोगे, वो हो सकता है आपको जवाब ना दे। keep on touching, get in touch with someone. May at last thank you so much to all the speakers for accepting my request and be a part of this webinar and enlighten to all of us with your We are very experience. humbled to join. With your Thank you so much thank for you so approaching much. us. It Thank has you so definitely much. I hope. added some learning to Like us as well. plus, and yes, guys, like today we are sharing our stories. Maybe you will also share your Yeah. stories in the upcoming In future. future, in the upcoming Yeah. future, you are also going to share the stories. So thank you so much to all the guys for accepting the request and be a part of this webinar. Hope we are keep in touch for the long time as well, not just because of the Definitely. webinar, maybe for the other purpose also. We are keep in touch and keep in talk with each other. So thank you so much. And still, Thank I have you. very Thank 60, you. 60, 70s viewers are still there. So, but we have to wrap up now. It's already You have 2 had a hours. lot of patience as we insisted upon. So Yes, if you and are as with they us say, for 2.5 minutes. yeah, as they say, it is difficult to talk, but it is, I think, more difficult to hear somebody Yeah, talking. listen, yeah. Yeah. All right. So thank you so much, guys, and we'll soon wrap up. Soon going to meet with some new webinar. And to let you know, all you guys again, आप किसी भी प्रोफेशनल स्पीकर से जो अभी मेरे वेबिनार में स्पीकर्स हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। कीप ऑन अप्रोचिंग देम ऑन द लिंक्डइन, or if you have Facebook, then Facebook. But try to get in touch with LinkedIn because it's a professional. But do approach the professional way. Text them if they are free. If they want to text back to you, they will definitely text back to you and they will help you. There is a professional from practicing. Manisha is from practicing. Saloni is from the Genpact, from the corporate. Disha and Shilpa is from teaching industry. So approach them if you want to get into these professions professionally. They will surely going to help that how you can move on and move ahead with your career. And one